I'm right where I wanna be with the beat on my Bentley. Checks on my Air Max. Haters better fall back before I put some in your broadcast. That's my chick, I got her back like. Hey guys, what up, what's going on? This is Duke King and I'm here with my lovely, beautiful sister, Nena. So today we are going to react to, you want to say the name? Ertugrul Turgut Bamsi interview and Urdu translation. So let's go. इस वीडियो का लिंक सेंड करके मुझे इस वीडियो की ट्रांसलेशन की रिक्वेस्ट की थी, तो अब फाइनली आज आप इस वीडियो They all look like a Viking, so, you know those Viking warriors. में इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। Is it their get-up? पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप उस सेट पर काम करने के यूज्ड टू हो गए थे? तुर्गुत बता रहे हैं कि उस बस्ती में काम करना बहुत ही अच्छा लगता था। हमारा मूड जैसा भी होता था, वहाँ जाते ही हम लोग मोटिवेट हो जाते थे। Quick question, you think back in the days when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was alive, how you think that's how all the men look like, the big beard and hair like that? I mean, they must have some idea, or they must have did some search. They made it. I think the drama is based on back in the day, when it is. But the thing is, they must have done some search. Probably, yeah. And then they made something. But guys, comment down below if we are right or wrong, and if you want to give us your comment, advice, or your opinion, that would be amazing. और बहुत खुशगवार मूड हो जाता था। उस सेट पर हमें बहुत हेल्प होती थी कि हम उस जमाने के हिसाब से परफॉर्मेंस दे सकें। नेक्स्ट इनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपकी तलवारें रियल थी और कोई एक्सीडेंट हुआ? तुर्गुत बता रहे हैं कि हमने बहुत कोशिश की है कि जितना भी हो सके हम बहुत अच्छे से करें, लेकिन जाहिर है कि कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए हैं वेपन्स के साथ, लेकिन हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी और बहुत कोशिश की थी कि एक दूसरे को हर्ट ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोगों को कंफ्यूजन होती थी एक दूसरे के साथ, क्योंकि सबके बाल और दाढ़ी एक से थे? तो ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हम सब भाइयों की तरह थे। बामसी कह रहे हैं कि ये एक इत्तेफाक है कि सबकी लुक एक जैसी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टूडियो का माहौल कैसा था? तुर्गुत ने कहा है कि बहुत ज्यादा फन था। बामसी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फन था, और इसके साथ साथ हम सब सिपाही भी एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए हैं। हम लोग भाइयों की तरह हैं और मेरा ख्याल है कि हम लोग रियल लाइफ में भी एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाएंगे। तुर्गुत कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत ही मजा किया है और हम लोगों में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। हम शूटिंग के अलावा भी एक दूसरे के साथ बाहर टाइम गुजारते हैं और हमारी परफॉर्मेंस में भी हमारी दोस्ती दिखेगी। अगला सवाल, नेक्स्ट सीरीज में हमें क्या देखने को मिलेगा? तुर्गुत बता रहे हैं कि हमें भी उतना ही पता है जितना कि ऑडियंस को पता है। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन ये सबके लिए सरप्राइज है और हमारे लिए भी। जंगें भी होंगी, हमें उनसे फाइट करते भी दिखाया जाएगा और सिपाहियों का एडवेंचर भी दिखाया जाएगा। और फिर इंगन यहाँ आकर बहुत ही फनी अंदाज में कह रहे हैं, मेरे सिपाहियों, और ये सब हंसते हैं। होस्ट इनसे पूछ रहे हैं कि क्या ये लोग आपके कैरेक्टर से डरते हैं? तो इंगन कह रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं है, इसको डर नहीं कहते। हमारा जो रिश्ता है वो प्यार का, रिस्पेक्ट का और रूह का है। इनका दिल बहुत बड़ा है, इस ड्रामा में भी और रियल लाइफ में भी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगला सवाल पूछा है कि सिपाही किस तरह के हैं? तो बामसी सिपाहियों के कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि उनका दिल और दिमाग इकट्ठे काम करते हैं। उनकी मॉरल वैल्यूज बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और सेम टाइम पर वो बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करते हैं और जहाँ जरूरत पड़े वो उस विजडम को यूज करके उस मुश्किल को हल कर देते हैं। और अब तुर्गुत भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि जो उनका ट्रेडिशन है, उनके आबाओ अजदाद के जो तरीके हैं, उनको ये कभी नहीं भूलते, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए।
और वो लड़ने में बहुत बेरहम और सेम टाइम पर बहुत स्वीट नेचर के हैं। और आखिर में तुर्गुत ने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि बाहर से शेर की तरह है लेकिन अंदर से ये मासूम गिलहरी की तरह है, बिल्कुल नरम दिल से। और फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि ये सब मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ लेकिन मेरे ख्याल से ये भी इस बात से एग्री करेंगे और हम बहुत खुश हैं कि हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और हमने सिपाहियों का कैरेक्टर प्ले किया है। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। You know what? The first thing I said, they all look alike. I'm Yeah, sorry. yeah, I me get too. confused with their. Of course, I'm not watching this drama, but at the moment, The whatever looks. this little clips are they showing, they all look alike. I'm confused Me which one too. is which. Yeah, I want to and, know which one is. and you know, the main their guy. every answer is like positive. Yeah, Like, oh, yeah. we had fun. We are Yeah. good. We are good friends in real life. I mean, it's a good sign of showing that Turkish people They are are very very famous friendly. for being very friendly, most friendly people in the world, Yeah. maybe. So yeah, Turkish, and you know how you say they look American? No. Who they look like? Arabic? Yeah. Yeah, they look Arabic, but the Turkey is end of. It's located in end of Asia and no, the it's- beginning of Europe. In Africa, So I think I they're- think Africa. No. It's Europe. I mean, Asia end on Turkey, and Europe begin on Turkey. So Okay. if they call, I believe they call themselves European. Yeah. So they look European, They're in European. and they're very good looking. And Very good looking. they kind of look like a Vikings. Vikings, yeah. Viking, the warrior Yeah. Vikings, you call them. They kind of look like big beard and Yeah. muscular and all that. Portugal is people are crazy about this guy. Yeah, seriously, it's Bouncy too. number Bouncy too. one drama right now in Pakistan. But- This drama number one in Pakistan. Even Turkey people are not watching as much as Pakistani people are watching. You know, I saw one of the very famous. I'm not gonna name it. The actor. Mm-hmm. It's actress. Correct? No, it's actor. He just mentioned if people start watching, I mean, giving them rate. Yeah. Turkish, what's gonna happen with Pakistani actors? They will be left behind. And, Oh. Well, I guess they are doing I mean, I love Pakistani actors. Yeah. They are known in the world for dramas, But this drama is so um, positive, like about Muslim message, positive. like spreading. But I want to know, is it a new drama in Turkey too, or no, I is think it it's old. it's couple years back? It's I was watching video how they trending back in the day to like I think from 2014. Oh, It's from 2014 to like 2020. I was looking at who's the number one country right now watching this drama. Pakistan is number okay. one. Pakistan is number one. And number Everyone two is watching. And number it. two is India. India's watching too. Yeah. And Okay. number three Turkey actually. Actually, I have seen somewhere Indian people are commenting Yeah. below for the song and the actors, Yeah. telling no, we love them and we are watching this drama. Probably all the Muslim watching in India. You know, there's more Muslim in India No, than I've seen some Pakistan. Hindu names there too as Muslims, but yeah, they're watching it, and I think it's famous all over the world. People in America are watching it Yeah, too. and it's on Netflix too. Netflix? Yeah. Oh, I'm gonna go home and watch this drama. It's in Urdu, English, Hindi. No, I'm probably, gonna you know, watch all it. that. It doesn't matter. I'm gonna watch it when I go back to Texas. I'm And- watching this. I think there's a lot of season. So, do you guys enjoy the interview as much as we do? Yeah, it Have was we fun, enjoyed man. it? They were knowing funny. How they They are were- in real. They seem like very loving, caring people in real life too. Yeah, like, very friendly, and as they're like, known yeah, for and being they're- friendly. And their brother, like they say, oh, we are brother, like now. I mean, they meet outside of the Yeah. sets and they're really like brothers. exactly. Yeah, but Artugal, he said he's a bad. There was something she said that he was. He said I'm a good boy and I'm a bad boy, or then he said, बाहर से शेर की तरह दिखता हूँ अंदर से. You know, the look, they were saying that he looked like, I mean, I want to lion. know if he was talking about the movie that he's looked like a lion, but no, under in real he's life, like you were this. saying that in, Or he's in in real real life, life is like on the that. outside, he looked like a lion, but it's Oh, from okay. inside, he's hard like little squirrel. Oh, okay. So, So we had fun. I yeah, like it. I really enjoyed it. Yeah. Hope you guys enjoyed it as much as we did. So if you like our reaction, guys, thumbs up, share, and subscribe. Those of you who are new to my channel, don't forget to hit that bell icon and get notified every time I upload a video for you guys. Again,
my sister need to make a YouTube channel. Just comment there, say make a channel. So that would be awesome. So, cause she read all the comments. So if you see 100 comments and saying 100 comments saying make the channel, she I'll will make a it. channel. Seriously. I'll make it. So thank you guys. I'll see you guys with the next video. Till then, peace. Peace. Let me catch my breath. Talk about leaving and you ain't gone yet. And if you leave correct. And I'ma send a jet to pick up the next. And I am no Elliot Ness.